Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another session of VOTP. And today's topic is Your Struggle Increases and Their Profits Soar. Confronting Interest and Taking Back Control by Brother Waqas. So before we get started, just a brief intro on VOTP. VOTP, as you know, it stands for Voice of the People. And the whole purpose of VOTP is to make ourselves accountable and to demand accountability from the rest of the community, including the leaders. And this is mainly by using our voices and speaking up, inshallah, and also making fundamental changes, on the ground in the various systems as well. So one of the important Yes, Assalamu alaikum. Am I issues. audible clearly? Yeah, you are. Am I audible? Yes. Can you hear Hello? me? We can hear you, Brother Waqas. Yeah. Let me type it. Am I audible? Yes, you are. Can you hear me? I think he's having issues with the headpiece, yeah. Okay, I'm going to stop the recording, Sister Farna. Yeah. Okay, we can start it again. It doesn't matter. No, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sister Farhana, can you say something that I can hear? Yeah, we can hear you. Okay. No, there is something wrong with my headphone. But we can hear you. We can hear you, Brother Waqas. Can you have your video on? Okay. First of all, I'm very sorry that my gadgets are not working at that moment, but now it seems that it will work now. So, Bismillah Rahman Rahim, and thanks a lot for inviting me again for to give presentation on this such important or rather critical subject. The topic suggested to me, I must say that it was suggested to me by Sister Farida, and she said that so far in past 8 presentations, we have discussed a lot about how banks work, the history of banking, and also regarding how interest is being charged and how compounding of that interest is being done, and how the astonishing thing that money is being created, or rather credit is being created out of nothing, out of thin air. So that astonishing fact, though it was known around the world in 1970s, even John Maynard Keynes, one of the biggest economists of 40s and 50s, or you can say the first half of this last century. Milton Friedman is the second famous and influential economist of second half of that last century. But John Maynard Keynes still he knew that something going wrong with the banking system, and banking have the power to create new money, new credit. But somehow later in his life, he after becoming the director of a big bank, he stopped advocating that thing that money is being created from the bank out of nothing. So there is something fishy going around, and it's not a conspiracy theory now, but it's a big fact. So after all these 8 presentations or 9 presentations, it is time to apply things in our life, and to have a special presentation to apply things on ourselves, on our society, on our children, on our homes. So this is the whole theme of this presentation. So let's begin. The cycle of debt and financial struggle. A debt cycle occurs when you continuously borrow money that you can't pay back. And often it looks that paying off one balance by borrowing from another
to settle debt from one account from another account. It looks like that you are paying something, but again you are trapping yourself in the debt cycle. So one should be very stern about that and should be worried about that. Second point is the consumer debt consists of those loans used for personal consumption as opposed to debts incurred by business or through government activities. For the last several presentations, we usually talked about loans. We're not especially concentrated on or focused on personal loans. We talked about general loans, loans taken by governments, loans taken by big corporations. But in this presentation, we will especially focus on consumer loans. Consumer debt may be segmented into revolving debt, which is paid monthly and may have a variable rate. We know credit card bills, which have variable rates. Why? Because it depends on that country's policy about interest, what interest rate the country is charging. So they adjusted the rates according to that. But it is not only true for the credit cards, also for other loans too. But compounding and every month a new bill arrive due to compounding of that interest. That is why we call it revolving debt, which is paid monthly. The non-revolving debt paid as a fixed rate, just like if you take car loan maybe or big housing loans, mortgages. So, but there's a separation between revolving debt and non-revolving debt. Consumer debt is considered by economists to be a suboptimal form of financing, as it often comes with high interest rates that can become difficult to pay off. What does it mean by suboptimal? In banking industry, they call themselves internally that giving loans to private people is suboptimal because it's not of high quality. It is not of high profit, maybe. Rather saying profit, it's better to say quality. Why? That is why that because the loan they are granting to the person could be a clerk, could be a blue collar employee, could be a school teacher. So they offer that loan to everyone, and they know that the chances of default is very high. So that's why they charge more interest. They act as a predator, and they lure their customer. They attract the customer. Not only they do that, but also in the case of any default or bad thing, uh, they chase them like a beast, you can say. So again, suboptimal loan means in the banking industry that it is being offered to weak segment of society. And it is strange that when they offer money to strong people, rich people, they charge less amount, less interest rates. But when they charge to poor people, weak segment of society, they charge higher interest rate. So it can speak a lot about the banking industry and the people who are running the banks. The debt of cycle and financial struggle, the cycle of debt and financial struggle, you can say. Again, four major consumer private debts are there. If you read papers, if you read articles, they will talk about four major loans: credit card debt, student loans, auto loans, and mortgages. Uh, in terms of priority, I should take mortgages to the top because you can see the graph uh, right side of my presentation, that it shows that since 2003, the mortgage debt, which is using usually the housing loan, you can see how exponentially it's increasing. 12.8 trillion is just mortgage debt in US. And you can take this proportion to everywhere in the world, especially Europe, if not India and Pakistan. Uh, you can take this trend to every country and every part of a region in this world. So then comes auto loans, if I'm not wrong. Just Auto maybe. yes. Yeah. So the orange line is student loan, which is 1.63 trillion, which is again a growing loan and very fast moving loan nowadays after
COVID, we can say. And still, you can, if you recall, if you remember, Joe Biden was asked to write off the all student loan, but he didn't. He write off loans of many powerful people in his history, in his lifetime, but he uh, didn't do that. And it was a great time for him to get good votes from Republicans, from American people, but still he was so entrenched and so, you can say, barred to do that he still didn't write off the simple student loan. A student who spent his 10, 20 years in education, and uh, and how weak and how, you can say, how not able to, a segment of people who's not able to pay loan, but still he was not able to write off the loan due to the pressure of banking industry. So credit card debt, you can see, 0.94 trillion, and debt is total personal debt in American society is right now is mounting to 18.2 trillion. So it means that the banking industry, the loan granting industry, having all this turmoil in the world, they still love and want to see people in debt because it's profitable for them. No matter 5%, 10% people are being defaulted, they are not able to pay. They still get their homes, get their jewelry, or other forms of property. So again, that 10, 20%, if they're not able to pay, they are still getting a lot of from them. But rest of the 80%, they're still able to pay interest, compound interest, and after 20, 30, depending on the terms of the loan, they are able to pay double, triple, quadruple amount of money on just you can say a minute amount or a small amount of money. They are at last they are going to pay quadruple of amount in 20 years, 30 years. Usually a home loan, which is paid in 30 years, after being paid all of the money, a person is resorted and ended into paying at least triple of the original amount of that house. Many of us is already know that. Allah ka shukar hai, I was not involved in any debt by purchasing my house in Pakistan. But people who are indulged, who are entrenched in this cycle, they know better. So rising interest rates and fees keep people trapped in debt. The psychological and economic impact of financial stress are known. Uh, Doctors are here, psychologists are here. They know that how stressful is on the man or on the woman who is a breadwinner of the house, how distressing and how stressful for them is to keep track of their debts and keep track of how much money they have to pay and how much money they have to allocate for debt payment. And it's just like a country, that if a country has to pay a lot of debt from its budget, it means it has less for spending for downtrodden societies, for weak segments, on education, on healthcare sector, or even building infrastructure and roads, and other bridges, and other, you can say, climate uh, uh, developments against climate disasters, like building dams or building to strengthen the sides of the river. So there are lots of investments which has to be cut down. Lots of spending has to be cut down just due to paying of debt and interest. You can say debt servicing. When you say debt servicing, it means paying out the original principal amount and also paying the interest. So just like any country, it also happens to home, that priorities are disturbed, and first priority becomes to pay the interest and to pay the loan. So psychologically, it's very, very troublesome. One survey found that 33% of Americans currently have more credit cards debt than savings. So they are not able to save too. And what saving does, it protects your future by the grace of Allah. Allah is all doing, and सब कामों का वो कारसाज है. लेकिन still planning point of view से कह रहा हूँ कि lots of American not able to save a lot of money for their future, for their retirement, post-retirement life. You can say. So again, very quickly, I'm not a psychologist and I'm not a doctor, but we know that what ailment
a person can incur or gets uh, when he is in stress, especially in financial stress. So physically, blood pressure, heart problem, digestive issues, weakened immune system, which is the cause of every other Sister Farhana is here. So I should not talk a lot on what weak immune system can do to human. Uh, Again, chronic headaches, migraines, sleepless nights. Then again, if you come to mental and emotional disorders or problems, anxiety and depression, uh, constant worries take you towards the very closed doors and narrow, you can say narrow, तंग गलियों में और बहुत ही मुश्किल चीजों में आपको ले जाती हैं. Anger and instability, strained relationship. Relationships is one of the biggest topic of VOTP. I have seen that a lot of time is spent by Sister Farida to have a strong relationship within the family, especially with husbands and wives. But again, if there are anxiety and depression regarding financial aspects, how can relationship can flourish? Obviously, जो मुत्तकी लोग हैं, the pious people and God-fearing people, they glorify themselves and they come in flying colors in strained and stressful conditions. But still, it's a part of life that it affects your emotional and again. So, low self-esteem and hopelessness, feeling trapped in debt again. So, lots of women also listening here. I'm not isolating them with men, but again, if the needs, if we can differentiate between needs and want, we can give a very good signals and good vibes to our bread earners, and he will become or he or she will become less stressful at how to cope or how to cover the expenses of the family. So again, the housewife or maybe houseman, they have to be very rational and you can say prudent about spending, and again the giving right signals and right communication, I can say to your breadwinner, so that he can work in office or do business with little bit of more comfort and uh, you can say again comfort and जो कहते हैं हम सुकून के साथ काम कर सके. So again, these ailments are due to financial stress, and one should be very worried and should be very careful about it. The latest studies say that 70% of college graduates leave school with student loan debt that averaged 38,000 in 2017. Because I found that a good piece of a good paragraph in a website, still 2017, 8 years old. But you can see that much debt that at that age does not go away quickly, and the impact of this is being felt in several areas, notably purchasing a home, starting a business, delaying marriage, and contributing to retirement accounts. So a lot of young boys and girls are delaying their marriages, and just due to that they want to become established in society and they want to be debt free, which is never happening. So one should be very careful before taking debt. And I'm talking generally right now. I'm not talking about right now at that moment at current moment about the perspective of Islam. We will see that in near future in a few moments, inshallah. So the word consumerism I have used many times so far. So just read the definition from Investopedia and think deeply. An economic and social system that encourages the consumption of goods and services as a means of attaining well-being. When I saw myself the first time, and when I saw the word well-being, because Alhamdulillah, on the topic of well-being, I have read a lot. And what Islam says about the well-being, and when you compare that well-being with this definition, a lot of alarms should be rung. Again, see that cycle. And obviously, when we read something, we think that, oh no, we are not entrapped, we are not in this cycle. Somebody else is in cycle. But deep down, if you look closely in your life, you are also trapped in this cycle. You want more, you want to earn,
more money, then buy more stuff, then you have to consume that stuff, and then you want more, then you have to earn more money. So again, you are in this cycle, and again and again. Maybe I have a slide also to a soul searching question that aren't we trapped in this? Or are we still in the fool's paradise that no, we are Muslims and we have learned a lot of Quran and a lot of Ahadith? Maybe we are not. No, we have to look again and again. So why it happens? Social media fuels consumerism and influence spending. Fear of missing out. Platforms like Instagram, TikTok, and fashion trends, Facebook constantly showcase luxury lifestyle, new gadgets, fashion trends, and travel expenses, making people feel pressured to keep up. Again, a lot of media stars and Hollywood and Bollywood stars, they come up and they influence people that and promote products often through paid partnerships. People think, okay, that star, star, my favorite footballer, and my favorite cricketer, he also likes this brand. No, he is paid. He's a paid guy. Somebody has paid him to speak about that product. He is not using that product, especially Coke and Pepsi. Hardly any sportsmen consume those things, but they are the first choice to promote Pepsi and Coca-Cola. Some good sportsmen like Cristiano Ronaldo and other few others, they also openly said that we should not promote this type of liquids, this type of stuff, because it is detrimental to health, because they are sportsmen. So there are some exceptions to that, but mostly they have been paid to speak about that. Even if you see, am I audible? Yes. Okay. So we have to be aware about those ads. Then targeted ads and algorithm. On the basis of your behavior, these all algorithms of Instagram and Facebook and YouTube, they track your behavior. And then again, okay, sometimes we used to tend towards uh, those things which are not usual in our life. But again, it records them, and again start promoting those things in front of you. And sometimes you irritate about those things because it was some part of your day or some part of your week maybe, and you search something, but still it's coming back to you. So it's really evil, I can say, I should say, that something you want to forget, but he keeps on reminding you that you did something, and you use that product, and or you um were looking to that thing. So again, I'm talking about the overall social media experience. But again, those ads are coming regarding your behavior and regarding your history. So it's very dangerous. And if now, not now, even before this presentation, we know this thing, we should be go against it. We should be spend our efforts, spend our time to go against that algorithm. So again, हमारे अंदर जो है वो उस बात की नॉलेज होगी, अकल होगी, तो हमारा तो गुस्सा भी आएगा. जब गुस्सा आएगा, then we will go, if we have anger, the right anger against those social media platforms, then we can act upon it. So again, they promote buy now pay later culture in movies and dramas. They also promote that the debt is normal thing. And just most of Muslims here, obviously we are all Muslims here, just imagine the sayings of Prophet, peace be upon him, how uh, he alarmed him and stopped us, and stopped us to be in debt. Only in very critical situation, if something is not going right, or if you really need something for your family or for your finances, then it's permissible, you can say, to ask loan from from someone. But again, in social media or in popular culture, normally it is shows it is shown that it's normal to be in debt. But it's not true. It's not good.
Again, people again, due to that social media campaigns and advertisements and the overall popular culture, people spend on non-essential item, designers clothes, gadgets, dining out. Dining out is not bad thing, but over dining out could be to project a certain image. Savings take a back seat, and disposable income is funneled into trends. Impulse purchase. I was discussing in the group that impulse purchase, it has its own cycle, and you can see right side of the presentation. We have at some other day we can discuss in detail that what is impulse purchase. But again, due to some envy, due to some to show off or to show pride to someone, these psychological issues may promote impulsive or impulse purchases. So again, uh, to have some good moments, a few days of happiness or over or you could say static behavior, and you are sacrificing your income, of your family's income, of your children's the spending you have to do on the children, or on your home, or on your future investment, or maybe on your skills, maybe on your education. Just due to some impulsive behavior, you have spent those money uh, into some useless account. Misaligned priorities. Again, spending on appearances instead of investment, education, skills, social welfare, real estate, savings. Again, currently I'm talking in a secular perspective, which is not very important. Again, for a Muslim, important thing is akhirah. But again, we have to understand few things in secular way too, so that we can, when we're talking this topic to a secular guy or maybe a less religious guy, we should have data, we should have arguments, we should have proof to tell them we're not coming only from the religious perspective or dini perspective, we're also coming from scientific and data-based perspective. So it's important to learn things in a non-religious way too. Comparison trap. Seeing others' perfect lives can lead to overspending to fill emotional voids. Few years ago, Instagram itself conducted a survey, and it's a very private survey. And and from the internal documents, it was proved that lots of women they found themselves very unfortunate or downtrodden or weak or having no life at all. And again, that leads towards suicidal trends, suicidal thoughts. So they themselves told to Instagram authorities that only showing the beautiful pictures and the only the happy moments of life, giving very wrong picture to the society. So it's a big topic. What is comparison trap, and some other day we can discuss, or some other expert maybe discuss on these two things, impulsive purchase and comparison trap, in more detail. So is that what Islam teaches us? Is this the way our beloved Prophet, peace be upon him, and his companions led their life? Is this what the Quran, the Al Furqan guides us about the reality of human life and about this world? So again, time is ticking, and we have to be very careful, and we should beware about what is going on, and the biggest thing that the time is ticking. So after this alarming alarm about all those things, so I found this beautiful image, and even in a one picture we have 4 or 5 big banks like Citibank and Goldman Sachs, and JP Morgan, Bank of America, and Wells Fargo. So these banks, I'm not going into detail because in last 8 presentations we have talked enough about these banks and the corrupt practices and the dubious accounting. We have everything we have learned, I think. And if someone want to go through again, these presentations are live and present on VOTP YouTube platform. So one of the point I want to discuss from this slide is
plant obsolete, your gadget and your clothes and your house and your car has become obsolete. Although it's just a 3 years old or maybe 4 years old, but they give you impression through social media, through ad campaigns that this this equipment, this gadget or this clothing line or this trend has become obsolete. So we have to come out of this trap. We should not be forced to consume something, and just because some multi company, some mega star or some high societies people are using and consuming certain things, it should not force us to spend money on those things. So we should be very careful. Companies designing products to break or become outdated quickly. Tech, fashion, and appliances. You can see sometimes they download the patches and download the upgrades, and then you have to buy a new mobile. So why they are doing that? Why they are not planning well before that? And why they are not being efficient in terms of their patches and downloads? But again, the version of Android are coming so quickly that after 3 or 4 years, you have to buy a new set of mobile cell phone. I mean, how this cycle keep people spending instead of saving or investing, and this cycle is again this forced consumption and the sense of becoming obsolete force people to spend a lot of money from their budget. One last slide for credit cards, especially because again credit cards are given to private people, and mostly the weak segment, not only weak segment, we know that a lot of uh, wealthy and powerful people also have credit cards, but most of credit cards and on credit cards on the high interest are being paid by middle class and middle class. So you can see charge 20 to 30%. There is a news in a UK market or maybe American market. I will share it after this presentation. That how a bill was being passed in some state of America, and they got the stay order. That bill was not allowing something to banks in terms of credit cards. I'm just forgetting the theme of that news. I will share it after the presentation. Then you can see that how lobbying and spending they are doing on the parliaments and the congresses and the politicians so that their business can grow relentlessly. That just give us 2 to 3% of the balance right now, and then we will give you 2 months 2 months reward, or maybe no balance, no monthly payment, and then after that you can give us uh, uh, monthly payments. So there they have lots of things to say to the customer. Again, this is come under the area of predatory lending, so which is illegal in many societies. So rewards and cashback illusions targeting vulnerable groups, students, low-income earners, and those with poor credit are offered subprime cards with higher fees and rates. So lower the person in finances and financial stability, the higher the interest charges. And that is what we call credit rating. So credit rating is being done before giving credit cards and loans. This is the chart. You can revert back when presentations will be uploaded. Uh, this is the status of right now in US, UK, and India about how much money is being paid off just in credit cards. Shocking fact: Americans pay 120 billion per year in credit card interest alone. So that 120 billion per year is being is transferring to already wealthy, already powerful people in the world. UK credit and UK credit card rates are now higher than payday loans. ये मतलब ये इतनी खतरनाक बात है कि payday loans are very, you can say, primitive type of loans that okay, I will give you some money and you will pay me back when you get your salary. बहुत ही मतलब
घटिया किस्म का पुराने अकसाम का एक लोन होता था। लेकिन ये इस जबरदस्त माशरे में इतने लर्निंग के बाद, आफ्टर ऑल दिस एजुकेशन एंड अगेन द लर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया एंड अबाउट इकोनॉमिक्स, स्टिल यूके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स गिविंग more interest than they used to pay on payday loans. मतलब पेडे लोन्स वालों को तो हम बुरा भला कहते हैं कि कितना यार गंदे लोग हैं वो, और यहाँ पर विदाउट इन ऑल मिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड मीडिया कैंपेन्स, they are charging more than those people who offer payday loans. Consumerism and debt as a tool of control. Very important, very important, very important. I must say 3 times that corporations benefit when people stay in loop of work, spend, debt. If a person is already in the debt cycle, how can he can change his job, or how can he improve his life by leaving that job and getting a new job, because he cannot afford to have even a 1 month of without a salary. Growing consumer interest-based debt keeps people trapped in jobs they hate. They also not able to do any labor movement, or even they cannot able to pressurize their owners or their employers to raise their wages, because they are so crippled by that debt trap कि वो चाहते हैं कि हम कोई बात ही ना करें और हमारी जॉब बची रहे, महफूज रहे. तो अगेन मैं कहीं पढ़ रहा था कि डेट ट्रैप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रोल ऑन पीपल बाय द बिग पीपल, बाय द बिग पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट्स. यानी ये एक तरीकाकार है कि अपराइजिंग ना हो, सिट इन्स ना हो, और जो है वो लोग जो है वो अपने हुकूक के लिए, राइट्स के लिए, दे शुड नॉट कम आउट ऑफ देयर होम्स, बिकॉज दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे, अबाउट द नेक्स्ट मंथ एंड अबाउट द नेक्स्ट ईयर. Systematic inequality and financial exploitation for benefits. And also, we should not forget controlling labor market, because they keep on inviting people from other countries. That's okay. अच्छा है जो जो लोग किसी और मुल्क पे जा रहे हैं, लेकिन still they keep the labor of that country under pressure, and to force them to take less wages in competition. So they also control the labor market through debt, using debt as a tool. Again, marginalized communities are affected the most, you can say. So taking back control, and now, as I was always told, that give solutions. Obviously, we are here to give solutions, and but again, niyat and the will is in our hands. Lot of things can be said, lot of things can be presented in the presentation. Again, it's up to us that we should take the control in our hands. So break free from consumerist trap, mindful spending, differentiating between needs and wants. Very important. हमें हमें फौरन चाहिए देखना, बात करें अपने घर वाले से, घर वाली से, कि हमारी जिंदगी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ, एंड वी शुड इन्वेस्ट एंड वी शुड स्पेंड मनी ऑन दैट एरिया, not on those areas which are not really necessary in life. अगेन मिनिमलिस्ट अप्रोच, ऑब्वियसली इसमें वो वाला मिनिमलिस्ट नहीं है ये जो हम नेट पे देखते हैं, जिसमें हम खाम खा और फोर्सफुल्ली अपने आप को जो है वो नेमतों से महरूम करते हैं. इट्स नॉट द वे ऑफ दीन, बट अगेन टू लिव अ सिंपल लाइफ इज प्रोमोटेड दिन दीन इस्लाम. एंटी कंज्यूमरिज्म मूवमेंट्स तभी आएंगी जब आप खुद कंज्यूमरिज्म से बाहर निकलेंगे. जब आप खुद बाहर निकलेंगे तभी आप एंटी कंज्यूमरिज्म मूवमेंट में ज्वाइन करेंगे. रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन कॉन्स्टेंट बाइंग, सस्टेनेबल चॉइसेस, इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी टू रेजिस्ट प्लांट obsolescence. आप कुछ चीज भी खरीदें उससे पहले सोचें कि इट शुड गिव मी बेनिफिट फॉर मोर देन 10 years or 5 years डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. सो नॉट गो फॉर ब्रांडिंग एंड other factors. Go for के चीज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग. इवन लॉन्ग लास्टिंग में आपकी सेहत भी आती है, कि अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको, आई थिंक, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को छोड़ना ही पड़ेगा. यू हैव टू अवॉइड मैनी 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 फूड्स एंड मैनी लग्जरीज एंड मैनी थिंग्स इन योर लाइफ. So again, if you're investing on your health, which is long lasting, so
This is the point I'm trying to convey. Community and shared economies, interest-free borrowing हो, thrifting हो as a goal. Thrifting again is a art, and science. आपको पता हो कि मैं कहीं बेवकूफ तो नहीं बन रहा, मैं क्या सही चीज ले रहा हूँ, जिसमें कोई इसमें रिसर्च करना पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग. And again, the last point, the cooperative ownership model. Richard Wolff, one of the famous economists, is promoting a lot regarding co-ops, worker co-ops. And he's about the point कि हम क्यों एक सरमायादार को और कैपिटलिस्ट को हम एक शेयर दें उसकी चीज में, हालांकि he is using our skills, our time, our education, our intellect, and then just mixing those things with uh, tools and other offices and the rooms and warehouses, mixing those things with art and the you can say technical expertise of of the employees. He is earning a lot, so why should we give them the capitalist a lot of things, a lot of share? So again, it's a model and it's an idea. और ये देखा जाए तो पाकिस्तान में जहाँ मैं काम करता हूँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, अगर उसका बिजनेस मॉडल देखें तो बेसिकली अ गवर्निंग बोर्ड इज देयर which is not paying, which is not being paid. Let's say they're not employees, they're not shareholders of the company. They're just overseeing the hospital, but the complete hospital is being run by the doctors. So it's just like a worker co-op. It means that all the profits will be spent on that hospital. No shareholders will get any money, and all the profit will be spent on the employees or in the infrastructure or onto the patients. So three basic accounts: on the patients, maybe on welfare and discounts, on new infrastructure, or then again the employees. So this model can be promoted around the world, and especially Mr. Richard Wolff is doing that. System predatory lending, we should do that, and advertising, especially to vulnerable groups. हम खुद नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम प्रमोट करें, हम बात करें एमपी से, पार्लियामेंटेरियन से, कांग्रेसमैन से, जहां जहां हमारा जो है वो इन्फ्लुएंस है, कि हम उनसे बात करें कि भाई वो इसके अगेंस्ट दे शुड परफॉर्म रेगुलेशंस एंड दे शुड पास न्यू बिल्स. And again, at our side, we are doing right now that we are educating whatever we can, how much we can, and giving education to our colleagues and our friends. तो कलेक्टिव एक्शंस एंड सिस्टमिक चेंजेस जो हैं वो हैं कैंपेन अगेंस्ट रिबा, बैंकिंग इंटरेस्ट, प्राइवेट मनी क्रिएशन. And after learning all those things in past 8 or 9 presentations, we should now advocate. We should now come forward to advocate people, to convince people, to campaign against riba, against bank interest, and tell them that how banks are not charging interest from our loan. Even that loan is not the real money. It's just a new money in the system, and that's also bringing inflation in the society, in the economy. Then organizing seminars, symposia, conferences with rational arguments, data, and statistics. Obviously, we are doing one of those things right now. Engaging politicians, or to be engaged in politics, both things can be done. Advocacy for Sharia compliant transactions and businesses and consumer protection. And we have talked several times in past presentations at what Mudarba is, what Musharaka is, and how it promotes profits, legal halal profit in Islam. Movement for debt jubilee. Again, a famous economist, Michael Hudson, if you can search on him on the net. Even in Hammurabi era, 5,000 year BC or 10,000 year BC, there was a concept of jubilee. And the word jubilee comes from that writing of the debt. Completely कितना कर्जों को माफ कर देना. So that phenomenon has stopped suddenly in last century. वो he was very suspicious and he was guiding us, and वो इशारा कर रहे होते हैं कि किसने किया, हम जानते हैं किसने किया. जूइश लॉबी ने किया, जिन्होंने बाद में बैंक बनाए, बट विदाउट टेकिंग देयर नेम, वो कह रहे हैं कि हर दौर में रोमन्स ने किया, असीरियंस ने किया, तो
पर्शियंस ने किया, तो उसने किया, तो उसने किया, बादशाहों के नाम के साथ। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, आई विल शेयर दैट टू, कि वो कहते हैं कि व्हाई द जुबली कॉन्सेप्ट हैज इरोडेड, व्हाई जुबली कॉन्सेप्ट हैज वैनिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी। जब भी कोई नया बादशाह आता था, वो पिछले बादशाह के तमाम लोन को माफ कर देता था, तो कम से कम 50 साल बाद, 60 साल बाद लोगों के तमाम कर्जे माफ हो जाते थे। कुछ तो होता था। जहां तो 1945 से लेकर आज तक a single penny of loan has not been written off। क्यों है? मतलब ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। तो अगेन, a movement can be done। हम आज हमने सीख लिया है, हम we can talk about that this in our families, societies and friends। तो इट विल ऑल्सो रिड्यूस इनइक्वालिटी, और जो ये जो जो वेल्थ गैप बन रहा है, इसे कम करेगा। तो माइंडसेट शिफ्ट फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, पर्सनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे एंड सिस्टमेटिक लेवल पे हमें ये काम करने होंगे। सो अगेन लास्ट, just to give you saying the concept of जोहर जो है, contentment, फना, Quran and Hadith, what Quran and Hadith says about it, and what is the life of this world except enjoyment of delusion। सूरह कुरान, आयत सूरह आल इमरान 185। richness is, हदीस में आता है, richness is not in having many possessions but richness is in contentment। बुखारी एंड मुस्लिम। यानी जो दिल का गना है, दिल का गनी होना है, कि मुझे नहीं चाहिए कोई चीज, मुझे जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जो है वो आपके जो प्रॉब्लम्स में कमी कर देता है। और ये यानी ये सुपरफिशियल नहीं होता, इट इज नॉट सुपरफिशियल, इट इज इनबिल्ट, कि आपके अंदर वो कनात का जज्बा हो, कि जिससे आप जो है मटेरियलिज्म से अपने आप को दूर कर सकें। तो इम्पैक्ट क्या है? शिफ्ट फोकस फ्रॉम मटेरियलिज्म टू ग्रेटिट्यूड, reducing impulsive spending। Quranic warning on israf: indeed the wasteful one are the brothers of devils। हदीस में आता है, the prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ate simple food, wore modest clothes and discouraged luxury, but having said this, prophet does not prophet does allow people to eat and wear good if Allah has blessed them, but not for show off and for arrogance and to prove something to others। तो ये कहना कि मतलब, जाहिर बात है सवाल जवाब में ये बातें आएंगी, तो क्या हम बिल्कुल मतलब यानी मॉडेस्टी का मतलब क्या है? तो ठीक है, अल्लाह ताला ने किसी को अगर माल दिया है तो उस पर उसका नजर भी आना चाहिए। हदीस में आता है कि अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया है, इट शुड बी एविडेंट फ्रॉम हिज लाइफ, बट नॉट फॉर शो ऑफ, या वो एरोगेंस के लिए हो, you have to prove something to other, कि देखो I can have this thing, I can have this car, I can have this cloth, or I can have this brand। तो अगर ये ध्यान में आ जाएगा, तो then again a person who has a minute part of arrogance in his mind, on his heart, will not go into Jannah। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। So after learning and seeing these prophetic sayings, Sallallahu Alaihi Wasallam, and Quran's ayah, the effect will be limits overconsumption, weakening corporate manipulation, and then in red warning that Quran has absolutely banned riba, even of 1 dirham or even of multi-million dirham or multi-million dollars। Allah permits trade and forbid interest। So profit sharing, मुदारबा और मुशारका और इंटरेस्ट फ्री लोन्स, कर्ज हसना would be an option। और अगेन, तमाम बातें जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कर रहे। वी शुड एक्ट अपॉन इट। टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज टिकिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन। अगेन, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज बट अम्यूजमेंट एंड डाइवर्जन। द होम ऑफ द हेयर आफ्टर इज द बेस्ट फॉर दोज हु फियर अल्लाह। इस आयत को पढ़ने के बाद, व्हाट इज द प्रैक्टिकल शिफ्ट? स्पेंडिंग ऑन चैरिटी, सदका एंड कम्युनिटी ओवर लग्जरीज। अगेन, कम्युनिटी पे खर्च करना, सदका सदका देना, अभी तो हम उस पर बात की नहीं है, वो तो अलग टॉपिक है पूरा। कि हम बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में डालेंगे, हम हबीब बैंक लिमिटेड के बजाय, या वेल्स फार्गो या जेपी मॉर्गन लिमिटेड बैंक में इन्वेस्टमेंट के बजाय अगर हम बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में डालें, तो कितना हमें फायदा होगा। तो जहां ना चोरी का धड़का है, ना वो खराब होता है, जैसे ईसा सलाम फरमाते हैं ना, कि ना वो चोरी होती है, ना कोई जंग लगता है, ना चीज खराब होती है, वो हर चीज वाली महफूज रहेगी अल्लाह के पास। तो मॉडर्न एप्लीकेशन क्या होगी? रिजेक्टिंग फास्ट फैशन, एक्सेसिव टेक अपग्रेड्स एंड लग्जरी ट्रेंड्स।
Islam discourages envy and hasad and raya. Hadith में आता है, look at those below you in wealth, not above you. So why it is written in wealth? Because the same hadith also tells us that look up to people who are better than you in piety and taqwa. Benefit of this hadith will be to break the cycle of competitive spending and benefit corporations. To live a meaningful life, God conscious life. Again, वो जो हम वहां पढ़ रहे थे कंज्यूमरिज्म की डेफिनेशन में इन्वेस्टोपीडिया में, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि वेल बीइंग, तो वेल बीइंग जो है वो मीनिंगफुल लाइफ में है. वेल बीइंग इज इन गॉड कॉन्शियस लाइफ. So again, this is the few other solutions. Okay, based on my presentation, we can go back again anytime. So jazakallah khair, asal jaza. I will really invite and encourage question answers. Right. Jazakallah khairan, Brother Waqas. Alhamdulillah, I think such an important topic, and I think made us think of what we are doing and how we are trapped in the wheel of consumerism. Subhanallah, and making we are once responsible for the profits of the others. Yeah. So please go ahead and ask questions and answers, and mashallah, please fill in the survey as well. It's a very short survey. Please fill in. It's very, very important for us. And I would definitely urge everyone to send the recording of this to all friends and family and kids and everyone, because the first step is to become aware of this, inshallah. Please go ahead and ask your questions. You can type it in chat as well as you can raise your hand and ask. Subhanallah. Any terminology or any concept we have discussed here, please. Most and there is no wrong questions. Only answers that could be wrong. There are no wrong questions. So please feel free. There is no problem in asking maybe a simplest of the question. I have just Sister Farhana, I'm just saying an interview, and I want to what to say, invite you to see that interview of Tucker Carlson with Professor Richard Werner, the same guy whose picture I posted on my last presentation. He has an he has a 3 hours interview with Tucker Carlson, and Tucker Carlson was so amazed, astonished by learning concepts like bank reading money and bank doing things, bank doing this, bank doing that. So he was ashamed and he was reluctant to ask questions. So Professor Richard Werner told him, Tucker, there is no wrong questions. You can ask me anything. So in a very polite manner, he told. So again, Tucker Carlson is one of the biggest, you can say, host, or you can say a anchor person, and he still knows nothing about finances and economics. So no problem in asking anything. Yeah. Subhanallah, I mean, how this is all done behind the curtain and in secrecy, and no one is aware. Yes, this is not taught in schools, not taught in Exactly. it's subhanallah. And I guess those people who go into the banking system or work in the banking system, they learn it, but then they keep it to themselves, ताकि फिर उनका पता नहीं कोई कांटेक्ट होगा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, बस हम इससे ना फायदा उठाएंगे. जो आप कह रही ना, यही बात उसने कही है कि ये आप कहते हैं सीक्रेसी है. क्रेडिट क्रिएशन का जो वर्ड है ना, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, ये एक तरह से तकरीबन इवन चैट जीपीटी और ये जो आपका डीप सीक है, इसको भी आप सवाल करेंगे ना स्टार्ट में, तो वो आपसे अवॉइड करेगा इसका जवाब देना. फिर आप उससे स्पेशली पूछेंगे, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट क्रिएशन, तब वो बोलेगा हाँ आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, रिचर्ड वर्नर ने भी कहा है. यानी इसका मतलब है मॉडल्स में भी छुपाने की कोशिश की जाती है. फर्स्ट इंस्टेंस में आपको कभी भी ये बात नहीं बताई जाएगी, लेकिन जब आप पूछेंगे तो वो डीप सीक कहता है या चैट जीपीटी कहता है, अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी सेंसिटिव टॉपिक, अच्छा तुमको पता है, तो अच्छा अब मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ. इस तरह से वो बात करता है आपसे वो. एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. यानी एलन ग्रीनस्पैन जो कि जो ग्रेट रिसेशन से पहले फेड का चेयरमैन था, यानी एलन ग्रीनस्पैन को कहते हैं कि उसकी पॉलिसी की वजह से 2008 का क्राइसिस आया. जब वो क्राइसिस आ गया तो बढ़ने की उस पर फेड के चेयरमैन थे, यानी उन्होंने हैंडल किया. बेसिकली जो तमाम पॉलिसीज थी वो एलन ग्रीनस्पैन की थी. तो एलन ग्रीनस्पैन के बारे में ये बता रहा था रिचर्ड वर्नर के किसी पार्टी में मुलाकात हुई
और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था प्रोफेसर वर्नर ने रिगार्डिंग क्रेडिट क्रिएशन के बैंक जो हैं वो इंटरमीडिएटरी नहीं है, ना वो डिपॉजिट में से दे रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, वो तो बेसिकली, और फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी भी फ्लॉप है इसे पढ़ाने के लिए बच्चों को। असल में तो हो रहा है मनी आउट ऑफ थिन ईयर क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा, वो आर्टिकल लिखा हुआ था, 4 साल बाद मुलाकात हुई इनकी एलन ग्रीनस्पैन से। अच्छा, एलन ग्रीनस्पैन इज बिग मैन ना, बिग टाइकून है वो तो, मतलब जबकि ये तो एक प्रोफेसर है। ये इनके पास गए, ये ये इंटरव्यू में बता रहा है टकर कार्सन को कि मैं इसके पास गया और मैंने एलन ग्रीनस्पैन से कहा कि माय नेम इज प्रोफेसर रिचर्ड वर्नर एंड आई आई होप दैट यू हैव रेड माय रिसर्च पेपर। तो इवन आफ्टर 5 इयर्स वो घूमा, उसने कहा, ओह मिस्टर वर्नर, बैंक ऑफ टोक्यो, क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी। तो वर्नर कहता है कि मैं बड़ा खुश हुआ कि इतना बड़ा हम्म आदमी, फेड का चेयरमैन, इसको 5 साल बाद भी पता है कि मैं बैंक ऑफ टोक्यो में मैं था, वहां की जो मैंने क्राइसिस को जब स्टडी किया तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि इट्स अबाउट ड्यू टू मनी क्रिएशन आउट ऑफ थिन एयर। तो अभी समझा कि ये और मुझसे बातें करेगा और उससे पूछेगा। तो जब उसने कहा ना वर्नर ने एलन ग्रीनस्पैन से कि सो यू हैव रेड माय आर्टिकल, सो व्हाट इज योर थॉट अबाउट माय आर्टिकल, कहते हैं बिल्कुल इस होता है ना अजनबी, पलटा हम्म और चला गया। पलटा और जैसे जानता ही नहीं उसको ना, यानी ये तो ये है, ये इनकी हालत है कि मजीद कमेंट्स करने के लिए इनके पास जो है मुंह में जुबान नहीं है, दे आर अफ्रेड टू स्पीक अबाउट इट। और फॉरन वन ये कहकर चला गया। so, तो इतना स्ट्रेंज बिहेवियर उसने दिया। जब उसने मजीद सवाल किया कि आप तो इतना मुझे जानते हैं, तो प्लीज एनी क्वेश्चन। yeah, subhanallah. Yeah, I think Sister Faida asked a very important question ki, स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। Sister Faida is asking good question to, the audience, let us know if you understood what is going on behind the scenes. Everyone can unmute yourself and, share कि what आपने क्या सीखा. ओपनली आप बात कर सकते हैं जी। हाँ, आपने इसमें से क्या सीखा? Sister Ayman, Sister Imam, yeah, Siddiqui, if you can just go ahead and unmute yourself and tell Ki, what did you understand from this, or have you not understood from this session? Can you go ahead and please unmute yourself? Um, But Vikas, let me ask a question while प्लीज। Ayman does unmutes herself. So a person has got themselves into debt. It's happened. They bought a car, they bought whatever things, and now there is a credit card. Now, how do they get out of this? What is the way to get out of this trap that we are saying that is? इसके लिए तो फिर मैं किसी आलिम से जरूर पूछूंगा, बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अब ये है कि इसी के प्रॉफिट एंड लॉस और आखिरत का एक इशू है। मतलब यानी देखें, या तो ये है कि वो कहीं से भी अरेंज करे, अपना कोई घर बेचे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, याद आ गया, वो जो है गाड़ी है, तो क्यों वो चाहता है इसको ओन करना। नाउ ही शुड सेल इट और तमाम लोन रिटर्न कर दे। अब इसमें क्या होगा, होता यही है कि यार मैंने तो अब तो इतना खर्चा कर दिया, अब थोड़ा सा सूद रह गया। तो अगर ये वाली मेंटेलिटी का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है फिर, कि मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल कर लूँ ये सूद का काम, मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं नेक्स्ट सूद नहीं लूंगा। तो मेरे पास इसका जवाब सिवाय इसके क्या है, आपने डेट ले लिया Mhm. तो उसके बाद आपको अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है, समझ में आ गया आपके कि समथिंग इज नॉट करेक्ट, तो आपको फिर फौरन उसको रिलिंक्विश करना चाहिए, उसको रिलिंक्विश करने की तैयारी करनी चाहिए, उसको छोड़ देने की तैयारी करनी चाहिए। ये सवाल करना कि इसको मैं कीप कंटिन्यू रखूं और मैं चाहूं उसको ले लूं, फिर तो आपको कोई आलिम भी जवाब नहीं देगा। सब आलिम जो है वो मतलब सर सर झुका लेंगे, मुंह उधर उधर कर लेंगे, क्या बोले इस पे कि नहीं। कोई आलिम ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं, आप जब तक ये लोन आपका है और जायज है उस वक्त तक तो आप सूद देते रहे, वो बस खामोश रहेगा। ये सवाल वैसे ही है सिस्टर फरीदा, कि अगर कोई पूछे कि मैं बैंक में काम करता हूँ और मुझे पता चल गया है कि बैंक की नौकरी सही नहीं है या ये तनख्वाह सही नहीं है, तो मैं क्या करूं, कंटिन्यू रखूं जब तक जॉब नहीं मिलती। तो अक्सर आलिम यही बोलते हैं कि हाँ, जब तक जॉब नहीं मिलती, क्योंकि ये एक मजबूरी, ऐसी मजबूरी है कि इसमें तो तनख्वाह ही मिलना बंद हो जाएगी। तो वो कहते हैं ठीक है, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप जॉब करते रहें, और लेकिन प्रमोट वो उस चीज को करते हैं कि अल्लाह को राज़िक और अल्लाह को गनी मानकर, अल्लाह को ऑल ऑल इतना ऑल नोइंग एंड ऑल डूइंग मानकर तुम जो है वो जॉब छोड़ दो
और जॉब छोड़ दो और इंशाल्लाह तुम्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब वो बंदा खुद ही बोलता है नहीं नहीं मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं छोटे, तो वो आलिम क्या बोलेगा? वो जी बोलेगा ठीक है, करते रहो जब तक जॉब नहीं मिलती। तो इसी तरह डेट में भी यही है कि अगर वो कह रहा है कि नहीं बस अब चंद किस्तें रह गई हैं, तो भाई आलिम से क्यों पूछ रहे हो? चंद किस्त तुमने तुमने इतनी किस्तें दे दी हैं, 3 किस्तें और दे दो। मतलब ये मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, ये मैं वही डर रहा हूँ बोलते हुए कि अब तुम दे दो, फिर अल्लाह से माफी मांगो। देखिए 100 आदमियों के कातिल को मेरे अल्लाह ने माफ कर दिया था। अल्लाह ताला बहुत रहीम करीम अत-तव्वाब हैं। हमें उसको माजल्ला माजल्ला ये नहीं करना चाहिए कि बार बार अल्लाह ताला के, लेकिन लेकिन अल्लाह ताला अत-तव्वाब हैं, वो 100 आदमियों के कातिल को भी माफ कर देंगे। हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हमसे गलतियां हो गई हैं जिंदगी में, हम गलती कर भी रहे हैं, तो मगर ये इसको फौरन छोड़ने की कोशिश करें। अब फौरन छोड़ने के ऑप्शंस क्या क्या है? क्या वो गाड़ी जो आपने बड़ी गाड़ी ली हुई है वो छोड़ दें? गाड़ी के मामले में तो बिल्कुल ही बंदे को छोड़ देना चाहिए। मेरा ये, अब मैं एक छोटा सा फतवा दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ। कि गाड़ी के मामले में क्या मसला है? हाँ, घर के मामले में मैं कह सकता हूँ, यानी कह सकते हैं कि घर में तो ऑलरेडी मैं रह रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किधर मैं, ठीक। तो घर के मामले में यानी आपको अल्लाह को जवाब देना है ना। आपने देखना है कि मैं अल्लाह के सामने आर्गुमेंट कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे किस आर्गुमेंट बोलेंगे? अब मैं क्या इसको कहूँ कि जब एक आम आदमी, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ तो मैं एक वीक आर्गुमेंट देता हूँ तो मेरा बॉस मेरी क्लास ले लेता है। मैं एक स्ट्रांग आर्गुमेंट देता हूँ तो मेरा बॉस कहता है हाँ ये बात तुम्हारी सही है, चलो तुम्हें माफ करता हूँ। तो आप सोचिए, अब अल्लाह के सामने बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला को अब ये बोलेंगे कि मेरी गाड़ी जो थी वो, जो क्या कहते हैं, पराडो थी या मित्सुबिशी फलाना थी, तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। भाई आप गाड़ी बेच दो, छोटी गाड़ी ले लो, आप फौरन सूद से बच सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड कि इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉर्गेजेस में होती हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगे। इसमें डॉक्टर सार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये भी कहते थे कि फिर अपने आप, आपकी जिंदगी में गुनाह हो गए हैं ना, गुनाह हो रहे हैं, गुनाह हो गए हैं, तो आप अपना टाइम स्पेंड करें पे अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में आप कैंपेन चलाएं, अल्लाह की राह में दावत दें, तबलीग दें, अपने आप को थकाएं, अपना खून जलाएं, अपना पसीना बहाएं, क्योंकि आपने जिंदगी में इतनी अय्याशियां कर ली हैं, गुनाह कर लिए, अल्लाह ताला ने आपको नहीं पकड़ा। तो अल्लाह ताला का आप इसका शुक्र का जवाब देने के लिए और अपनी मगफरत के लिए आप टाइम स्पेंड करें अल्लाह की राह में। और जिस तरह पाकिस्तान में हम तंजीम इस्लामी डॉक्टर सार अहमद के जो लोग हैं, वो मतलब सूद के खिलाफ कैंपेन चलाते रहते हैं। तो अक्सर हम बोलते हैं कि भाई हमने जिंदगी में माजी माजी में बहुत सूद खाया, ये किया और बैंक इंटरेस्ट ले लिया, तो अब हम इसको रिपेंट कर रहे हैं। रिपेंट करने का तरीका कर क्या है कि पिछले पिछले गुनाहों पर तौबा करना, शर्मिंदगी का इजहार करना, अशेम्ड ऑफ होना, करंटली वो काम छोड़ देना, फ्यूचर में वो ना करने का पक्का अहद करना। और चौथी शर्त कहते हैं, हज़रत अली कमर फरमाते हैं कि जितना वक्त तुमने उस बुराई में लगाया है, कम से कम उस बुराई के खिलाफ आप काम तो शुरू करो, स्ट्रगल शुरू करो। तो ये बातें हैं कि इंसान अपने दिल से भी फतवा दे सकता है। अक्सर बातों पे रसूलुल्लाह बोलते थे तुम्हारा दिल क्या बोलता है? तो साहबा बोलते थे कि मेरा दिल तो कहता है कि हमसे गलती हो रही है, हम चाहते नहीं है ये बात लोगों को पता चले। कहते हैं जो बात तुम चाहते हो लोगों को बताना चले, वही तो गुनाह है। तो इंसान को यानी कभी कभार अपने दिल से फतवा भी देना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उलमा कराम बैठे हुए हैं, तो मुझे पता है वैसे उलमा कराम इसी तरह बात करते हैं कि आप फौरन छोड़ दें। हम्म, और अगर नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, आप फौरन फौरन प्लानिंग करें किस तरह से मैं छोड़ सकता हूँ उसको। Hmm. That's Alhamdulillah, that's exactly what we should be doing. Brother Vikas, the other thing I've noticed is that, the way people are being trained is to use the credit card, right? तो आपकी सैलरी आई नहीं होती है और you are using that credit card, and when your salary comes in, you pay the previous month का जो भी आपका bill था. तो it's being done in the reverse order. So you're spending before you have earned the money. So the idea was कि भाई वो आप मुझे बताएं, we all went through this cycle in UK. We lost, we lost on account of it जब in the early 2007 2000 उस वक्त जब ये सब कुछ recession वगैरह आया. जी। And the first thing we did was we cut up our credit cards. We just threw them away. सुभान We अल्लाह, threw सुभान them अल्लाह। away और खाली डेबिट कार्ड यूज करो. है क्या पैसा तो बात है, खर्च बहुत करो. यू नो जबरदस्त। तो वो ये चीज तो हमें लानी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? इज दिस हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में बहुत क्रेडिट कार्ड यूज होता है. बहुत ज्यादा, बहुत. बहुत ज्यादा। हम्म. देखिए अभी जो हमने ये जो सोशल मीडिया की बात की, देखिए हर साल लाखों लड़के जवान होकर स्कूल कॉलेज से जॉब्स में आ रहे हैं। पाकिस्तान में वैसे ही कहते हैं कि 35 से बिलो जो पॉपुलेशन है वो मतलब 70% है।
मतलब यूथ है, यूथ। अब यंग पीपल अगर सोशल मीडिया में इंडल्ज हैं, अभी हमने जो तमाम बातें इस प्रेजेंटेशन में सीखी हैं, उसको दोबारा हम वन बाय वन अगर सिर्फ रिकॉल कर लें पॉइंट वाइज, कि भाई इम्पल्सिव स्पेंडिंग क्यों हो रही है? इसलिए हो रही ना कि मुझे शो ऑफ करना है, मुझे अपने सर्कल में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में मुझे एक नुमाया मुमताज, अलग से दिखना है, कपड़ों में सबसे आगे रहना है। ठीक है, मर्दों में खवातीन दोनों में ट्रेंड आम है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और दीन से दूरी है, कुरान से दूरी है। हमने तो दो तीन स्लाइड्स ही कुरान की देखी ना। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान तो हर सफ़े पर जो है आपको आखिरत की याद दिलाता है, आपके मरने का एहसास दिलाता है। इवन आपको जन्नत में जाना है ना, कि जन्नत के फलों का तस्करा है, तो उसके लिए भी मरना पड़ता है। तो इसलिए पहले मरेंगे तब जन्नत में जाएंगे। तो मतलब हर पेज पे आपको जो है ना, मौत का ही एहसास होगा कि मैं मरूंगा तो जाऊंगा ना जन्नत में, तो मरने का तो आपको रहेगा। तो ये अगर जो फीलिंग है कि तुम्हें मरना है एक दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दिलों में जंग चढ़ जाता है, और ये जंग तभी खत्म होगा ये तुम कसरत से मौत को याद रखो और कुरान पढ़ो, ने कुरान तकरीबन रोजाना पढ़ो। तो कुरान और मौत, और साथ में फिर एक और हदीस में आता है, और कुरान के एक और मकाम पे आता है, कूनू मास सादिकीन, सच्चे और अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, उनके साथ हो जाओ। तो ये तीन चार चीजें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं कि आपके अंदर ईमान कैसे आएगा। जब ईमान आएगा ना, तमाम प्रॉब्लम जो सिस्टर फरीदा आपने बयान की हैं, कि सैलरी आने से पहले ही उसको जो है जल्दी है खर्च करने की, या उसको एनवी है, या उसमें इसराफ है, या उसमें कनात की कमी है, या उसमें मीनिंगफुल लाइफ की डेफिनेशन है, उसमें कोई करप्शन है। यानी मीनिंगफुल लाइफ, मेंटल वेलबींग, या एक अच्छी जिंदगी के बारे में जो एरिस्टोटल ने कहा था गुड लाइफ। तो वो गुड लाइफ क्या होती है? इवन एरिस्टोटल कहता है कि भाई सच बोलो, झूठ ना बोलो, सादगी से रहो। यानी उसके उसकी किताबों में मिलता है कि वो कहता है कि गुड लाइफ और पर्पसफुल लाइफ और मीनिंग लाइफ का मतलब ये होता है। हालांकि वी डोंट नो कि अरिस्टोटल जो है उसको अल्लाह पर ईमान था या नहीं था, ये एक डिबेट अलग है। लेकिन हर बंदा ही कहता है कि सेहत का ख्याल रखो, लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स पे, वो थिंग जो लॉन्ग लास्ट करे उस पर इन्वेस्टमेंट करो। सबसे लॉन्ग लास्टिंग थिंग क्या है? मेरा सवाल है इस फोरम से, सबसे लॉन्ग लास्टिंग थिंग क्या होगी इंसानी लाइफ में एज अ मुसलमान? सबसे लॉन्ग लास्टिंग थिंग एज अ मुसलमान हमारे लिए क्या होगा? एनीवन को जवाब दे सकता? हमारे अमाल, हमारे नेक अमाल, अमान। इससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चीज कोई नहीं होगी। क्योंकि ये वो करेंसी है जो क़यामत के दिन काम आएगी। यानी हमारे तमाम डॉलर्स पाउंड्स तो यहाँ रह जाएंगे, और हमारे पास जो करेंसी होगी ना आखिरत में, वो हमारे नेक अमाल होंगे। सबसे लॉन्ग लास्टिंग चीज क्या हुई फिर? हर चीज क्रश हो गई, हर चीज जो है वो टेंटेड हो गई, या उसमें जंग लग गया, सड़ गई, गल गई। एक चीज जो है वो आखिर आपकी उधर भी है, जब आप क़यामत के दिन पहुंचे तो आपकी जेब में वो भरी पड़ी हुई है, वो आपकी नेक अमाल है। तो नेक अमाल पे इन्वेस्टमेंट कब होगी? इस दुनिया में होगी ना, कि मैं जिंदा हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, अल्लाह के शुक्र है हम सब जिंदा इस वक्त हैं। तो आज का टाइम है ना वो इन्वेस्टमेंट करने का। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास वक्त है, हमारे पास हमारी औलाद है, हमारे पास सेहत है, और हमारे पास पैसा है। तो चार पांच चीजें फरमाते हैं ना, एक हदीस में आता है कि तुम इन चार चीजों को चार से पहले गनीमत जानो। मौत को जिंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, पैसे यानी पैसे को गुर्बत से पहले, और इसी तरह एक और है, हाँ, मसरूफियत को फुर्सत से पहले, सॉरी, फुर्सत को मसरूफियत से पहले, यानी वक्त। तो ये चार चार पांच हमारे पास, ये चार पांच चीजें हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट अगर हम लॉन्ग लास्टिंग चीज में कर देंगे तो हमें काम आएगी। तो अभी जो मिस्टर फरीदा ने जो मसाइल बयान किए हैं, वो सारे मसाइल तो साइकोलॉजी या ईमान हकीकी या ट्रू ट्रू फेथ से रिलेटेड है। तो वो लड़का लड़की कुरान पढ़ेगा, असलियत को जानेगा, हकीकत को जानेगा, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फैक्ट, व्हाट इज रियल, इनको पहचानेगा, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं चीजों पे करेगा। हाँ, हैविंग सेड दिस, अच्छे घर में रहना, या लग्जरीज का वर्ड भी अब तो कंफर्ट लग्जरीज भी कॉमन ही हो गया है। इसमें समझ भी नहीं आता कि लग्जरी कौन सी है, कंफर्ट कौन सी है। नहीं, अब एसी जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अब लग्जरी थोड़ी है, वो तो एक अब एक हाँ, जरूरत है। तो ठीक है, अरे ये वो तो उसमें देख लो, तो उसमें ये रहते मसरूम हुए पेंट अगर क्यों वो कुछ आया? कर रहा है। जी, हेलो। नहीं, इट इज माइक किसी का अच्छा खुला अच्छा, था ठीक, नहीं। ओके। तो ये बात है कि तो इंशाल्लाह हम सब गुनाहगार, हम सब कभी हम भी ऐसी बातें नहीं करते थे, और अभी भी गलतियां करते होंगे। लेकिन यह है कि ये डिपेंड करेगा एजुकेशन पे, पुरानी एजुकेशन पे। और जब ये वर्ड्स उसके दिल में इनकलकेट होना शुरू होंगी, तो उसको पता चल जाएगा कि यार मुझे जरूरत नहीं है कि मैं क्रेडिट कार्ड लूं, मेरी डेबिट कार्ड काफी है मेरे लिए, और जो मैं कमाता हूँ उसी में खर्च करूं।
अपने चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैलाऊं। तो ये सब चीजें जो है, वो जो कनात का जो कॉन्सेप्ट है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ेगा, सहाबा कराम की जिंदगी पढ़ेगा कि उन्होंने किस लेवल पर जिंदगी गुजारी है, उसको शर्म आएगी। हमें हमें शर्म आएगी। हमें शर्म आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ताजदार कायनात होने के बावजूद भी जो है वो ऑप्शनल गरीब थे, वो ऑप्शनल। यानी फरिश्ते ने कहा था कि अल्लाह ताला का पैगाम आया है कि आपको क्या क्या गरीब नबी, ये कहते हैं एक गरीब नबी बनना है या एक बादशाह नबी बनना है। तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब नबी बनने पर करूंगा, तौकीद दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन जब भूखा रहूं तो मैं अल्लाह का सब्र करूं, और जब मुझे खाना मिल जाए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। यानी ये रसूलुल्लाह जिनके हम मानने वाले हैं, जिनके हम उम्मती हैं, जिनके नाम पे हम कुर्बान होने को, यानी हम दावा करते हैं कि हम मर जाएंगे, तो वो तो इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमारी मर्सिडीज बेंज और हमारी उससे अच्छी गाड़ी वही कम नहीं हो रही। कितना अफसोस की बात है। तो ये तमाम चीजें जो है ना, उसी से यही जो है वो ट्रिगर होंगी। जब हम दीन इस्लाम पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरह पढ़ेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। Sure. Yeah. I think Sis Shama has a very good idea on the, on the chat. Can we start? ये मैंने स्लाइड इसलिए खोली है, Hmm. सबसे फरहाना, जी जी. मैंने ये स्लाइड इसलिए खोली थी, इसमें मैंने येलो किया हुआ ना, येलो, Yeah. मुझको याद आया इनको देखकर। Yes. Yeah. Hmm. Pay the full balance monthly to avoid interest. Yeah. There is some problem in internet, please repeat. No, we got it, Brother Vikas. If unavailable, pay the full balance monthly to avoid interest. हाँ, ये मैं आपकी साउंड थोड़ी ड्रॉप हो रही है। I think good idea, Sister Shama. We should be saying more about no use of credit cards. Yeah. Right. This is Shama. If you want to lead this, we can, we do have the VOTP YouTube platform, social media platform. If you want to lead this effort, we can make small videos, and maybe people just, cutting their, credit card and shredding it, and shredding it. So people can just, it can just become a trend. It can go viral. So something can be done always. One person is enough, and just like Brother Waqas was saying, right? One person. I mean, usually these evil is also produced by one person or a few people on the top. Similarly, good thing also can start from one person. We can So all decide here not to have a credit card, just don't have a hmm, credit card, just have a debit right, card. yeah. Usko very creatively na, like people, every Muslim cutting the credit card and shredding it. ये इसकी एक रील शुरू करें, because it has to be creative. It has to, थोड़ा सा, it has to be different, थोड़ा सा catching. So it'll start the trend. People, it'll start. It'll go viral. Shama, you got the जी, project. Sister Fran You got a project. she's given it. सलमा साहबा ने एक सवाल किया है Hmm. कि क्या मैं क्रेडिट कार्ड को जस्ट कट कर दूं, या एक जुमला रहने दिया, लेकिन उसको मैंने येलो कर दिया और स्मॉल भी कर दिया, क्योंकि वो एक मेरी तरफ से वो प्रमोशन नहीं है, लेकिन वो एक बात है कि इफ यू हैव क्रेडिट कार्ड एंड यू आर पेइंग द बिल राइट ऑन फर्स्ट और सेकंड ऑफ एवरी मंथ विदाउट इनकरिंग एनी इंटरेस्ट, तो स्टिल आप कम से कम सूद तो बच गए, इसमें इनकार नहीं है। लेकिन मत भूलिए, मत भूलिए और मत भूलिए, फिर 3 दफा मैंने कहा है, क्योंकि आप एक इंटरेस्ट बेस्ड मुआहदे में शामिल हैं। यानी क्रेडिट कार्ड का जो एग्रीमेंट है, उसमें आपने ये एग्री किया है कि अगर मैं तो दे दूंगा, अब तो आप दे रहे हैं ना, वो तो चाहते हैं कि आप देर से दें ताकि आप खूब इंटरेस्ट दें, लेकिन चूंकि आप मुसलमान हैं और आप समझते हैं कि नहीं मैं अच्छा बच्चा हूं, तो मैं जो हूं ना वो टाइम पे दूंगा। ठीक है, टाइम पे दिया आपने, तो कम से कम आप एक गुनाह से बच गए, और वो गुनाह ये है कि आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। लेकिन आप ऑलरेडी एक गुनाह में शामिल है, वो ये क्या है कि यू आर पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट दैट दैट आस्क्स यू दैट यू विल पे इंटरेस्ट विद दिस एंड दैट अमाउंट every month with all penalties और ये और फलाना, एंड यू हैव साइंड दैट एग्रीमेंट। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस को याद रखिए,
सूद को लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर जो है वो यानी इस बात को मानने वाला कि मैं सूद दे दूंगा, तो ये भी जो है वो गलत बात है। तो वी शुड अवॉइड, गेट रिड ऑफ इट इमीडिएटली। Yeah. Inshallah, we should start movement on BOTP. I will, uh, yeah, I will, inshallah, send a video of, cutting the. Get rid of credit cards. How would you go about for emergencies, like God forbid situations? We will all, if anyone has. Well, you should have a savings account anyway. Why don't we have a savings account where Brother Waqas just said save some money every month? That's supposed to be a part of financing, isn't it? Save a little money, and that's for your rainy day. Yeah. True. And we can even have a community, community pool. If any, alhamdulillah, we can have a community pool. We can create a community emergency rainy fund. That's what we'll have to make alternatives, right? Like that, community pool and stuff, where we can all start saving money and putting it together and invest it in businesses and stuff and make it grow. देखें, एक काम तो ये हो सकता है ना कि हम में से हर कोई अपनी फैमिली में जिसको वो पसंद करता है, ऑब्वियसली फैमिली में अक्सर लोगों को हम बहुत पसंद करते हैं ना, सभी को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद कर सकते हैं। तो उनको आप फाइंड आउट करें और उनको आप कर्ज हसना दें, अगर उनमें से जो गरीब है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अजनबियों को कर्ज हसना देने में प्रॉब्लम इसलिए होगी जब तक वो एक क्रेडिट वेलफेयर सिस्टम नहीं बनेगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। और वैसे हैं, मैंने सिस्टर फरीदा को बताया है कि पाकिस्तान में एक फाउंडेशन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, अखुवत अखुवत फाउंडेशन, जिनके अवार्ड्स भी मिले हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं हमारे। इस तरह ये ग्रामीण बैंक है ना, ग्रामीण बैंक आई डोंट नो कि वो कर्ज हंसना था या वो लो इंटरेस्ट रेट पे था, इसलिए मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट ग्रामीण बैंक। इसके यूनुस साहब जो है अभी प्राइम मिनिस्टर भी हैं बांग्लादेश के, लेकिन आई कैन टेल दिस फॉर श्योर, जो पाकिस्तान में अखवत फाउंडेशन है वो टोटली इंटरेस्ट फ्री है, यानी कर्ज हंसना है वो। तो इस टाइप के इदारे अगर बनाए जाएं, और जरूरी नहीं कि हम अखवत फाउंडेशन को देखें, हम आपस में मिलकर बना सकते हैं, हम आपस में भी मिलकर बना सकते हैं कि भाई जहाँ पे हम, और अगर नहीं बना सकें किसी वजह से, अगर नहीं बना सकें तो स्टिल वी हैव फैमिली मेंबर्स, हमारे पास फ्रेंड्स हैं, उनमें से कोई अगर स्ट्रगलिंग है तो आप कर्ज देकर अल्लाह की रजा हासिल करें। अगर आखिरत पेश नजर है, आखिरा है, तो आप देख लें कितना ज्यादा सवाब है इस बात का। मैंने एक बार सुना चुका हूँ कि एक बंदा था कि जो जिसको अपना कोई नई कमल याद नहीं आ रहा था, तो सिर्फ कर्ज को माफ करने की वजह से और कर्ज देने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो मग़फ़िरत कर दी। Yeah. Okay. Yeah, bilkul. This is a big area of opportunity for youth who are, want to, make proper Islamic, investments. Again, collecting in हमारे यहाँ at least in UK, US और UK में ना 401k के नाम पे पैसे जमा करते हैं companies में, and वो पैसा is probably used in a lot of illegal stuff, on not illegal companies which are not right. And again, we don't have good substitutes for that. So that's all again opportunities for young Muslim entrepreneurs and financial experts to open up, and the Muslims can put in that, and they can invest in value-based, ethical projects, and make money for themselves as well as for the investors. This is a huge opportunity. This is a gold mine for getting jobs and making an alternative actually. Yeah, all the Muslim population is waiting for solution on this area. We all want to not be committing the guna. So we are looking for somebody to lead the way and place our money there where it would be correctly used. Yeah. So some people, I think, as parents, अपने youngsters को be encouraged करें to choose this line. There are a lot of people who've got a lot of money and they will give it to even start the bank. They will give it, but you have to do the Bismillah. Yeah.
बिल्कुल प्राइवेट लेवल पे एक लिमिट तक तो इंसान बिल्कुल नहीं, जब मैंने अल्लाह के हुजूर पेश हो तो ये बोले कि मैं ये मेहनत कर रहा था, मैं काम कर रहा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सादत है और एक सक्सेस है। लेकिन ऑब्वियसली कंप्लीट सिस्टम चेंज करने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अगेन यूके के लोगों की, अमेरिकन लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अंडरस्टैंडेबल। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं या जहाँ पे कम से कम स्ट्रगल की जा सकती है इस मौजू पे, इवन अमेरिका में की जा सकती है, लेकिन अमेरिका में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं बैंकिंग के अगेंस्ट, और जो मूवमेंट्स हैं, इवन वॉल स्ट्रीट जो था, वॉल स्ट्रीट मूवमेंट थी, मतलब लोग जान चुके हैं कि ये कैसे बुरे लोग हैं ये लोग, तो उसमें भी शामिल हुआ जा सकता है। लेकिन ये समझकर कि ये बहुत स्ट्रांग लॉबी है, हम उनको बीट नहीं कर सकते, एक मायूसी होती है। लेकिन फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि तो नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तक मेहनत करते रहे, लेकिन आखिरकार कश्ती में उनको सिर्फ 40-50 लोगों के साथ ही जो वो निकलना पड़ा। तो जब इतने बड़े नबी कि जो कहते हैं कि 5 बड़े नबी शामिल हैं, यानी कि 1,74,000 जो पैगंबर आए, उनमें जो 313 रसूल हैं, उन 313 में जो 5 उलुल अज़म बड़े रसूल हैं, उनमें नूह अलैहिस्सलाम शामिल है। और नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा, यह है कि दुनियावी तौर पे सक्सेसफुल आप उनको नहीं कह सकते, यानी दुनियावी तौर पे। लेकिन क्या अल्लाह ताला को ये चाहिए? नहीं, अल्लाह को चाहिए स्ट्रगल। अल्लाह को चाहिए तुमने कितना मेहनत की, तुमने कितना टाइम स्पेंड किया, कितने तुमने अपने बच्चों को लगाया, अपने वक्त को लगाया, अपने माल को लगाया, अपने सेहत को लगाया, तो बस वो सक्सेसफुल इसका मतलब है। जब नूर इस्लाम सक्सेसफुल है, इसका मतलब है नूर इस्लाम का जो वर्ल्डली वर्ल्डली गेन या सक्सेस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने अल्लाह के लिए कितना काम किया वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी ये चीज देखकर घबराना नहीं चाहिए कि भाई ये जूइश लॉबी और फलान लॉबी और बैंकिंग लॉबी तो फलान लॉबी इतनी स्ट्रांग है। हमें अपना काम सिद्के दिल से, कंप्लीट कमिटमेंट के साथ करना चाहिए। इंशाल्लाह। Yeah, inshallah. Inshallah. I think this is a big area. Yes, spreading it to your kids and everyone. And inshallah, may keep making dua as well. We have Muslim financial leaders, inshallah. Inshallah. We can find All out. right. So please fill in the कोई feedback सवाल form. सवाल बाद में भी पूछे जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आस्क Yeah, क्वेश्चन लेटर टू। yeah. तो Inshallah. On the on the group WhatsApp, maybe you can post your questions. Inshallah, we'll answer it there as well. And Sister Shama, inshallah, you have a project at your hand, which is an excellent idea. And let's start that trend, inshallah, on our social media. We already have VOTP in a social media platform already. Tayar hai. So just under that, you can, make this, just commit to that, making the videos, and people can send in, the images of, cutting the thing and shredding it. And we should some creative idea करके ना इंशाल्लाह इसको start करेंगे इंशाल्लाह. Okay. And أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.